कल की क्लास में हमने देखा था कैसे हम फ्रंट एंड से फॉर्म के थ्रू डेटा सबमिट कर रहे थे और कैसे वो बैक एंड में डेटाबेस मोंगोडीबी में सबमिट हो रहा था। ये हमने कल देख लिया है। हमने कल यहाँ पे डेटा को सबमिट भी कराया था और उसे यहाँ पे चेक भी किया था। ये आ गया डेटा। अच्छा, कल ओके, कल तक तो डेटा क्या है, टेस्ट में आ रहा था ना। आज हम रजत वाले डेटाबेस में डेटा डालें। डेटाबेस रजत नाम से कैसे बना है? ये जो डेटाबेस आपको दिख रहा है, कुछ भी चेंज नहीं किया है हमने, काम वही है। बैकएंड में जो क्वेरी स्ट्रिंग, डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग थी, उसमें हमने यहाँ पे ये लिख दिया ऐसे। आज क्या देखने वाले हैं हम? आज हम देखने वाले हैं कैसे डेटा को फ्रंट एंड पे डिस्प्ले कराया जा सकता है। आइडिया ये है कि राउटिंग के थ्रू एक नया पेज बनाऊंगा मैं। ये है ऐड स्टूडेंट का, वो हो जाएगा डिस्प्ले स्टूडेंट और डिस्प्ले रिजल्ट का। वहां पे हम डेटा फेच करके उसे डिस्प्ले करा देंगे। देन नेक्स्ट स्टेप रहेंगे डिलीशन और अपडेशन के। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रंट एंड पे सबसे पहले हम एक राउटर खड़ा कर लेते हैं। एसआरसी में ऐप जेएसएक्स कल सीधे ऐड रिकॉर्ड पे जा रहा था, आज ऐप जेएसएक्स में एक राउटर बना लेते हैं। तो राउटर का सारा काम मैं कर देता हूँ जल्दी से। क्रिएट ब्राउजर राउटर। चलिए इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, लिख देते हैं इंपोर्ट क्रिएट ब्राउजर राउटर। And we will also be using router provider. Both of them will be coming from React Router DOM. React Router DOM I think हमने कल ही इंस्टॉल कर लिया था, लास्ट क्लास में ही इंस्टॉल कर लिया था. If you're not sure, just go to your package JSON and see, yes, we have React Router DOM. Make sure you are using the latest version 7. Create browser router, takes an array of objects. So path, of course, पहले थिंग रहेगी, और सॉरी, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट देना था तो पहले ऑब्जेक्ट। सबसे पहले राउट हमेशा होम राउट रहता है। स्लैश के लिए क्या चलेगा? तो हमने कहा स्लैश के एक एलिमेंट चल जाएगा फर्स्ट। ऑफ कोर्स मैं क्रिएट करूंगा अभी। वाई फर्स्ट? चलिए पहले इसको क्रिएट कर देते हैं। पेजेस सारे पेजेस नाम के फोल्डर के अंदर रखेंगे हम। सो फर्स्ट डॉट जेएसएक्स। फर्स्ट डॉट जेएसएक्स एक बहुत ही सिंपल सा पेज है जिसमें सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स हेडर एंड फुटर रहेंगे। हेडर ऑफ कोर्स क्रिएट करेंगे। फुटर कॉमन एलिमेंट्स, और इसके अलावा द एलिमेंट दैट विल कीप चेंजिंग, दैट इज आउटलेट। हेडर एंड फुटर दोनों एक दूसरे फोल्डर कंपोनेंट से आएंगे। कंपोनेंट्स हेडर जेएसएक्स आर एफ सी ई कर देते हैं फिलहाल। एंड वेरी सिमिलरली फुटर जेएसएक्स आर एफ सी ई। हेडर हैज टू बी इंपोर्टेड, नहीं आ रहा, चलिए कोई बात नहीं, मैन्युअली कर देते हैं। इंपोर्ट हेडर from. So we are into pages. First, we have to go out of pages. Then we can go into components and then header. Very similarly for footer. In React, we can skip the extension. As I told you yesterday, in Node.js, we will have to write the extension, whatever that is. तो ये है मेरी फर्स्ट JSX, एंड जब लोकल होस्ट 5173 URL में होगा तब ये चलेगा। नाउ चूंकि फर्स्ट में मैंने कहा है हेडर एंड फुटर तो एक्चुअल कंपोनेंट्स हैं, हेडर फुटर। अच्छा, फर्स्ट यहाँ इंपोर्ट नहीं है, लेट मी इंपोर्ट फर्स्ट।
सो हमको जाना है पेजेस में हमें मिल जाएगा फर्स्ट. सो यस, एज आई वाज सेइंग, चूंकि हमने कहा है व्हेन द यूआरएल हैज लोकल होस्ट 5173, तो फर्स्ट नाम का कंपोनेंट चलेगा. हेडर तो ट्रांसलेट हो जाएगा इनटू व्हाटएवर आई राइट इनटू हेडर टैग. फुटर ट्रांसलेट हो जाएगा इनटू व्हाटएवर आई राइट इनटू द फुटर टैग. व्हाट अबाउट आउटलेट? आउटलेट किस में ट्रांसफर होगा? आउटलेट किस में चेंज होगा? ये हमें बताना है. ये हम राउटर में ही बता सकते हैं. Oops. By specifying a children, children will also take an array of objects. When you have localhost 5173, that is slash in your route, the outlet inside first will change into whatever the index children would be. चिल्ड्रन में जो भी इंडेक्स राउट होगा, जिसमें इंडेक्स ट्रू लिखा हुआ होगा, फर्स्ट पे जो राउटर है, फर्स्ट पे जो आउटलेट है, वो उस एलिमेंट में चेंज हो जाएगा. और मैं कह रहा हूं ऐड रिकॉर्ड. ये क्या किया मैंने? ये मैंने किया है पहले भी लोकल होस्ट 5173 जब हम ब्राउजर में लिख रहे थे तो ऐड रिकॉर्ड चल रहा था. अब भी ऐड रिकॉर्ड चलेगा. डिफरेंस ये है, अब पहले हेडर, फिर ऐड रिकॉर्ड और फिर फुटर आएगा. लेट मी शो यू इन द ब्राउजर. हेडर और फुटर नहीं आए. हेडर लिखा हुआ आना चाहिए था. लेट मी सी, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है. ओके. हम्म. ओके. अभी कहां से दिखेगा? फ्रॉम ऐप वी आर डायरेक्टली रिटर्निंग एड रिकॉर्ड. इसको हटाना पड़ेगा. यहां पे मैं लिख रहा हूं राउटर प्रोवाइडर. राउटर प्रोवाइडर टेक्स एन आर्ग्यूमेंट जिसका नाम भी राउटर है. ये प्रॉप का नाम हमेशा ही राउटर रहेगा. इसमें जो वेरिएबल मैं डालूंगा, चूंकि मैंने उसका नाम राउटर लिखा है, तो ये राउटर यहां आएगा. दिस कुड हैव बीन एनीथिंग. ये नाम तो हमेशा राउटर ही रहेगा. अब जब ये मैंने कर दिया, अब ब्राउजर में जब लोकल होस्ट 5173, लोकल होस्ट 5173 दैट इज होम राउट आएगा, तो फर्स्ट जिसमें से आएगा हेडर, footer, and the outlet will go to the index route. That is, outlet will change into index route, that is add record. Header, footer, and add record. Why this strategy? Because now if I make another children route, let's say students, or maybe show students or display students. I can say whenever the URL says localhost 5173 slash display students, then change the outlet in the first to display students. Of course, this page has to be created. And let's create that display students dot JSX. So what we have done so far is this. If I go to the browser and if the URL points to localhost 5173, then you will see this. But if the URL says localhost 5173 display students, D and S has to be small, then you will see header, footer, and the outlet changing to display students. And in display students, now, oops, let's see. Yeah. Okay. Let us now use a use effect inside display students. That is, whenever the page loads, I want to fetch data from the backend. So I will call fetch a function fetch students. This will be an async function fetch students. And what will it do? We are using Axios, right? So Axios. This time it will be a get request.
I haven't written the route because we have to create the route in the backend first. So let's go to the backend. We will come back to this page in a moment. Our API till yesterday had only one function. Now let's create another. Let's make a route slash student slash get. So whenever you get a get request on this, so this is the URL that will be feeding to display students. Let me do that. There you go. We have to write the complete URL here. We haven't created Axios config. We will do that as well. Localhost 8000 student get. Okay, so whenever you get a request at this URL, execute this function. It will take the request and the response. We already have Mongoose set up, so all I will do is something like this. Student model dot. So I'm using a function called find, and I'm passing an empty object as an argument to that function. Find returns a promise. Okay, we can't see that, but find returns a promise. That means we have to wait for that to be complete, and because we are using await, the function has to be async. Student model will dot find will go to the student model, the student collection, that is, take out all the data that it has, because we are not passing any filter. At later stages, we will see that we can filter out the data based on numerous conditions. Right now, we just want all the data. That is why an empty object. We will wait for the promise to be resolved. The data will have students' data from the database. First, let's console that data right here in the backend only. So console log data. I think we already saw how to use error handling now. So let's do a try and catch only here. Try this. And if you find any error in this code, pass the error to catch and execute the catch. Now we already know what this is. Error fetching students. And if you want to see the actual error message, so error string will be error.message. So we will send this. Okay. Let's see. Let's send a request from the front end. All we have to do is go to the page, localhost display students, and refresh. Right now, we will not see anything in the browser's console, in the front end's console, but we should see something in the backend. Let's see. Oh, so we are getting an empty array. Okay. Empty array usually means that there is no data in the database, but that is not the case in our database. We know we have some data. Okay. Actually, we don't have the data. Why? Right now, we are using the Rajat database. Rajat database, yes, does not have the data because the data that we stored yesterday was in test. Okay, just for the time being, let's rather add some data to the Rajat database also. Na? Okay, so let's do one thing. Let's go to the home page. Let's try and add some data. Okay, data received. We should have a success message here. That is fine. We will do that. So now the database must have some data. Let's see. There you go. And if we now go to the display students, we will not see anything here. But if we go to the backend now,
Open up the terminal. You can see we have an array of objects. So we will now send this array of objects back instead of console logging. So return response. Now status. You can send a manual 200. If you want, status code by default will be 200 only. So it's your choice whether you send it explicitly or not. We will simply send out the data. Express JSON will convert it into a JSON string and will send it to the front end. We don't have to do that explicitly. Let's go to the front end that is in the browser. Let's refresh. You can now see the data here. So now we have to display this data in a tabular format up here. For that, let's go to the front end. Let's create a state. Set students, use state. Because we will be getting an array, so let's create a blank array first. Instead of console logging, let's call set students. Data from previous render. And then, okay, let's not do like this. Let's do simple response dot data. Why response dot data? Response had other things as well, which we did not require. So response dot data, that is why. So now when we have something in the students, we want to display that. Let's see. And we only want to display it when we have something in the students. So when students dot length is greater than 0, only then do the following. So then map out the students dot map. Let's say object. Oops. So we want to return something. We have to create the table first, now. So let's create the table. A table has to be created outside the loop. In fact, we would also need a single TR up top that will also come out of the loop. In that TR, we can have a TH, which will say serial number, student name, or name. What else? Let's show the email for now only. And we will also have a actions tab, actions TH. Actions will contain the delete and edit buttons. Now we have to return from the loop, we have to return TRs, which will contain the actual data. For the key, you can always use the underscore ID that MongoDB by default provides. So there you go. Now the key requirement is fulfilled. TD. Serial number. For serial number, never use the underscore ID for serial numbers. Use simple numbers 1, 2, 3, 4. And let me show you first. Okay. So if you are thinking of creating a simple variable, let's say count 1. If you are thinking of using something like this, let's say count plus plus, it might seem a good strategy. Let me just tell you right away, using use ref is a better strategy. I will leave it right here. I will leave it for your imagination, for you to figure out why using use ref would be a better option. Let's figure out how to get the names and everything. Obj dot name, I believe it was, obj dot email. And now we need 2 buttons. So a button for edit. You can always use icons from Font Awesome or React icons or anything.
delete. Let's go to the front end. Let's see what we have. Ta-da! The actual size is this. Yes, you are seeing that the count variable is working, right? Again, let me iterate. Useref will be a better option. Why? I'll leave that for your imagination. I would like you to try how we can edit or how we can delete. Or first, I would like you to rather try how we can delete data from by pressing the delete button here from the database. Let me also tell you that for that, you will have to send a delete request, which will be something like this app.delete and some endpoint. Inside the function, you can use functions provided by Mongoose that can be find by ID and delete. You can also use find and delete. Very similarly, for the update case, you have find by ID and update and find and update. Try to use those. Try to read the documentation on Mongoose.js. In the next class, I will definitely tell you how to go about using them. I would like you to first try for yourself, and I will see you in the next class. Thank you.